Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're jumping into something pretty significant based on summaries generated by a large language model. We're looking at two key documents from the world of computer science and math. That's right. The first one is, it's a cornerstone. The 2002 paper PRIMES is MP. Ah, yes. The famous one from Manindra, Agrawal, Neeraj, Kayal, and Nitin, Saxena at IIT Kanpur. This is where the AKS Primality test came from. Exactly, the Agrawal, Kayal, Saxena test. And our second source is actually a discussion about that paper written by Fields medalist Terence Tao. Okay, so two fantastic sources. And our goal today, we want to unpack these, really try to understand this AKS test, and we're aiming to do it in a way that makes sense, even if maybe theoretical computer science isn't your everyday thing. Yeah, make it accessible. And look, before we dive in properly, we really have to say this. Please, if you can, find the original PRIMES in P paper. Oh, definitely. We've linked it in the show notes. Whether you subscribe or not, reading it is, it's fundamental. It's worth the effort. Absolutely. So, okay, setting the scene. Primality testing. Why all the fuss? Why is checking if a number is prime so important? It sounds basic, almost ancient. It is ancient. It's a core problem in number theory. But it's also become incredibly practical, hasn't it? Especially with cryptography. Modern crypto relies heavily on finding and using very large prime numbers. Right. So the challenge for a long, long time was finding a specific kind of algorithm, wasn't it? Yes. The Holy Grail was an unconditional, deterministic, polynomial time algorithm. Unconditional means it works without assuming any unproven hypotheses. Deterministic means no randomness involved. It gives the same answer every time. And polynomial time means efficient in the computer science sense. Exactly. In AKS, they delivered it. That's what we're diving into, how they cracked it. Okay, let's start right at the beginning then. Prime numbers. What are they and how did people first try to check for them? So a prime number is just a whole number bigger than 1 that can only be divided evenly by 1 and itself. 2, 3, 5, 7, 11, those guys. The building blocks of integers. Precisely. And the oldest method to check if a number, let's call it n, is prime. That's trial division. Just trying to divide it. Yep. You try dividing them by every number starting from 2 all the way up to the square root of n. If nothing divides it evenly in that range, then n must be prime. It's kind of like the sieve of Eratosthenes, but focused on just one number. Seems simple enough, but you mentioned efficient earlier. Trial division isn't efficient in that computer science way, is it? No, not at all. In complexity theory, efficient usually means the runtime is polynomial in the size of the input. And the size of the input number n isn't in itself. Right. It's the number of digits, or bits, needed to write down, which is roughly log n, the logarithm of n. Okay, so an efficient algorithm needs to run in time like log n raised to some fixed power, say log n squared or cubed. Exactly. Trial division takes about square root of n steps. That square root of n grows much, much faster than any power of log n. It's exponential in the input size. So computationally, it's very slow for large numbers. Got it. So efficient means polynomial in log n. Where did primality testing stand in the complexity zoo before AKS came along? Well, it was known pretty early on to be in co-NP. Co-NP, meaning? Meaning if a number is not prime, if it's composite, there's really easy proof. Just give one of its factors. You can check if that factor divides the number really quickly, right? Verifying compositeness is easy. Okay, easy to prove it's not prime if you have a factor. What about proving it is prime? That was shown later by von Pratt in 1974. He proved that primes is also in NP. NP. So there's a short certificate or proof for primality too, one that can be checked quickly? Exactly. So primes was known to be in this interesting class, NP intersection, co-NP. This often suggests a problem might be easier than general NP problems. The big question remaining was, is it actually NP? Can we decide primality deterministically in polynomial time, not just check a proof? That was the million-dollar question then. So people were chipping away at it. What were some of the key steps or ideas before AKS? Well, a really useful tool was Fermat's little theorem. Oh, okay. Remind us. It states that if p is a prime number and you take any integer a that isn't a multiple of p, then a raised to the power, p1, leaves a remainder of 1 when you divide by p. So AP1 is congruent to 1 modulo p. And checking that kind of congruence, like AN1 congruent to 1 mod n, is fast. Yeah, you can compute powers modulo n very efficiently using a method called repeated squaring.
So checking the condition itself is polynomial time. But there's always a but, isn't there? There is. The problem is this test isn't foolproof. It works one way. Primes always pass for A not divisible by P, but some composite numbers also pass this test. Oh, right. The Carmichael numbers. Exactly. These are composite numbers n that pretend to be prime by satisfying an1 congruent to 1 mod n for all A that are co-prime to n. So passing the Fermat test doesn't actually guarantee the number is prime. That's a tricky loophole. So that test wasn't enough. What came next? Well, things went in a couple of directions. Gary Miller, back in 1975, came up with a deterministic test that was polynomial time. Okay, so problem solved. Not quite. His proof that the test was correct relied on the truth of the extended Riemann hypothesis, the ERH. Which is? A huge, famous, unproven conjecture in mathematics. So Miller's test was conditional. Brilliant, but conditional. Conditional on proving ERH. Okay, what about unconditional tests? Michael Rabin, building on Miller's work, modified the test around 1980. He made it unconditional, no ERH needed, but he had to make it randomized. So he uses random coin flips somehow. Yes. It's very fast and gives the right answer with extremely high probability, but there's always that tiny, tiny chance it could be wrong. Solovay and Strassen developed another influential randomized test around the same time, which was also deterministic if you assumed ERH. So we had choices. Deterministic if ERH is true, or unconditionally correct, but randomized. Neither was the deterministic unconditional polynomial time solution everyone wanted. Right, and then there was a major deterministic step forward by Adelman, Pomerantz, and Rumley, the APR test in '83. Was that polynomial time? Almost. It was deterministic, unconditional, much faster than exponential. But its runtime was just slightly slower than polynomial. It was like log n raised to the power of log n. Very clever, very close, but technically not polynomial time. Wow, log n. Okay. Getting closer. Any other significant approaches? Yeah, then elliptic curves came into play. Goldwasser and Killian, and later Atkin, used them to create randomized algorithms. Randomized again? Yes, but these were different. They were expected to run in polynomial time for most inputs, and importantly, they produced actual certificates of primality. They could prove a number is prime. Unlike the earlier randomized tests like Miller-Rabin, which mostly proved compositeness. Generally, yes. Adelman and Huang then refined the elliptic curve approach to get a randomized algorithm that worked in expected polynomial time for all inputs. Okay, so lots of progress. Yeah. Conditional deterministic, unconditional randomized, near polynomial deterministic, randomized with certificates. But that ultimate goal remained elusive. Exactly. Everyone was still hunting for that algorithm that ticked all the boxes. Unconditional, deterministic, polynomial time. Which finally brings us to Agrawal, Kayal, and Saxena in 2002. What was their breakthrough idea? It seems almost too simple in hindsight. It's based on a generalization of Fermat's little theorem, but using polynomials instead of just numbers. Okay. Here's the core identity. Pick an integer n, at least 2, and another integer a that doesn't share any factors with n, other than 1. Then n is prime if and only if the polynomial x plus a raised to the power n is congruent to the polynomial xn plus a when you consider the coefficients modulo n. Hold on. X plus an congruent to xn plus mn. You're comparing two polynomials. Yes, term by term. You expand x plus an using a binomial theorem, reduce all the coefficients modulo n, and check if you're left with just xn plus a mod n. Why does this work for primes? It comes down to binomial coefficients. When n is prime, the binomial coefficient in choose, the coefficient of xni in the expansion, is divisible by n for all I between 1 and n1. So all the middle terms in the expansion just vanish modulo n. Exactly. You're left with xn plus n. And then, by Fermat's little theorem itself, n is congruent to a modulo n when n is prime. So boom, x plus an becomes xn plus a mod n. And if n is composite? If n is composite, at least one of those middle binomial coefficients in choose I will not be divisible by n. So the congruence, x plus an, a xn plus a, mod n, simply won't hold true for all a. Okay, that identity is really neat, but checking it directly. If you expand x plus an, you get terms up to xn. Checking all n plus 1 coefficients still sounds like it takes time proportional to n, right? Which is still exponential in log n. You're absolutely right. Calculating and comparing the full polynomials is too slow. That's the crucial hurdle they had to overcome, and this is where their main innovation lies. Reoptimization. Yes. They realized they didn't need to check the congruence for the entire polynomial. They could check it within a smaller mathematical box, so to speak. They checked the congruence not just modulo n, but also modulo another polynomial, xr1, for some carefully chosen small value of r. So the actual test equation becomes
is x plus an congruent to xn plus a, not just mod n, but mod xr1n. Precisely. Working modulo xr1 has the effect of, well, simplifying things. Since xr is congruent to 1 mod xr1, higher powers of x wrap around, it dramatically reduces the number of coefficients you need to track. Okay. Now, primes will always satisfy this new boxed congruence, right? Because they satisfy the original one. Correct. Primes pass this test for any a and any r. The challenge, again, is composites. Could a composite number n sneak through this mod xr1 and test for some a and r? Like the Carmichael numbers for the original Fermat test. Kind of, yeah. A composite might satisfy the congruence for some a and r. The genius of AKS was proving how to choose r and how many a's to check to guarantee that no composite number, that is in a prime power, could pass all the checks. And they showed that the required r and the number of a's needed were both small enough, bounded by a polynomial in log n. Exactly. That's what makes the whole thing work in polynomial time. They found the sweet spot. A test strong enough to catch composites, but simple enough, by working modulo xr1, to be computed quickly. Okay, let's walk through the actual steps of the AKS algorithm. Maybe just the high points from the paper. Sure. Step 1 is pretty straightforward. Check if n is a perfect power. Like, is n for some integers a and b greater than 1? Like 81 is 9 squared or 3 to the 4th. Right. If it is, it's definitely composite. And checking for perfect powers can be done very efficiently in polynomial time. Good. Get the obvious composites out of the way. Step 2. Step 2 is about finding a special number r. They find the smallest integer r, such that the order of n modulo r is greater than log n2. The order of n modulo r, what does that capture? Roughly, it measures how n behaves cyclically when you keep multiplying it by itself and taking remainders modulo r. Finding an r where this cycle length, the order, is large enough greater than log n2 is crucial for the later stages of the proof. They prove in a lemma that such an r always exists and isn't too big. It's bounded by a polynomial in log n. Okay, so find this r that has a certain mathematical property related to n. What's next? Step 3. Step 3 is another quick check. For every integer a from 1 up to r, calculate the greatest common divisor, GCD, of a and n. If that GCD is anything other than 1 but less than n, then you found a factor of n. So if GCD an is, say, 7 and n isn't 7, then 7 is a factor and n is composite. Exactly. Another efficient check for factors. Step 4. Step 4 is simple. If n happens to be less than or equal to the r you found, and it passed the earlier checks, then you can just declare n prime. This handles small potential primes quickly because r itself isn't huge. Makes sense. And now, the main event, Step 5. Step 5 is the core loop, the polynomial congruence check we discussed. It iterates through values of a, starting from a1 up to a certain limit. This limit is roughly the square root of 4 times log n, where 4 is Euler's totient function related to r. Okay, so you loop through a up to that calculated bound, and inside the loop. Inside the loop, for each a, you compute both sides of the congruence, x plus an and xn plus a. Then you check if they're identical modulo, both xr1 and n. And if you find even one value of a in that range where the congruence doesn't hold. If it fails for any a, the algorithm immediately stops and outputs composite, because we know true primes must satisfy this for all a. But if it holds true for every single a you test in that loop. If the loop finishes, meaning the congruence held for all a from 1 up to the limit, then the algorithm outputs prime. And the claim, the big theorem in their paper, is that this algorithm is correct. Yes. Theorem 4.1. The algorithm outputs prime if and only if n is actually prime. Showing primes pass is relatively easy, following from the properties we discussed. The real heavy lifting in the paper is proving the converse, that if the algorithm outputs prime and couldn't possibly have been composite unless it was a perfect power caught in step 1. Right, proving that composites always get caught somewhere. That sounds like the heart of the proof. Can we get a feeling for how they did that? It sounds really technical. It is technical, involving group theory and field theory, but we can sketch the strategy. The proof works by contradiction. Assume n is composite, it passed step 1, so it's not a perfect power, and it also passed step 5, the polynomial checks. Okay, assume a composite slipped through. Now, the fact that n passed step 5 for all those a values implies that n itself and its prime factors, let's say p is a prime factor n, behave in a very specific prime-like way with respect to these polynomials modulo xr1 and p. They use the term introspective number for this behavior. If fxm mod xr1p, then m is introspective for fx. Okay, so passing the test implies
n and its prime factors p have this introspective property for the polynomials x plus a. Yes. And they show that this property is closed under multiplication. If m1 and mn2 are introspective numbers for a polynomial, then m1-2 is also introspective. So you can build sets of these numbers. Exactly. They define two important groups, collections of elements with a nice mathematical structure. Groups based on. One group, let's call it Gunham, is generated by numbers related to n and p, specifically np and p considered modulo r. Because of how R was chosen in step 2, this group is guaranteed to have a certain minimum size related to log n2. Okay, a group of numbers modulo R guaranteed to be reasonably large. What's the other group? The other group, Giepeli, is generated by the polynomials x plus a that passed the test in step 5, considered modulo an irreducible factor of xr1 and the prime factor p. A group of polynomials this time. Yes. Now, using the introspective property derived from passing step 5, they can relate these two groups. They managed to establish both a lower bound and an upper bound on the size of this polynomial group Giepeli. And this is where the contradiction comes in. Precisely. If you assume n is composite and not a prime power, npk, the lower bound they calculate for the size of Giepeli turns out to be larger than the upper bound they calculate for its size. Wait, the minimum size is bigger than the maximum size? That's impossible. Exactly. It's a contradiction. The calculation relies heavily on the assumption that n has at least two distinct prime factors, or is pk with k1. The only way to resolve this mathematical impossibility is to conclude that the initial assumption must have been wrong. Meaning n cannot be composite and also pass all the tests. Right. Since step 1 already ruled out n being a perfect power, like pk for k1, the only possibility left is that n must be a prime number itself. NP. It's really elegant, using the structure imposed by passing the test to force a contradiction if the number isn't prime. Wow. Okay, that's a glimpse into a really clever proof strategy. Let's talk speed. They proved it was polynomial time. What was the initial complexity they stated? In the original paper, they proved the algorithm runs in O log n, 0.21.5 time. O tilde. What does the tilde mean again? Right, the O soft O notation basically ignores factors that are logarithmic in log n. So O log nk means roughly log nk times maybe some powers of log n. It simplifies the expression, focusing on the main polynomial power. So O log n 21.5 is definitely polynomial time. Still seems like a high exponent, 21.5. What part of the algorithm takes the most time? It's overwhelmingly step 5, that loop where you check the polynomial congruence x plus an, axn plus a mod xr1n. The time for that depends on r, which determines the degree of the polynomials you're working with modulo xr1, and the number of a values you have to check, which also depends on r. So if you could prove that a suitable r exists that's smaller than what they initially used in the proof, the algorithm would get faster. Absolutely. The size of R is a major factor. If, for instance, you could show R only needs to be around log n2, the complexity would drop dramatically, maybe down to something like O log n6. And were there reasons to think a smaller r might exist? Any mathematical hints? Yes, there are connections to number theory conjectures. For example, Barton's conjecture on primitive roots suggests that primes q, where n generates all the non-zero numbers modulo q, are common. Also, the Sophie-Germain prime density conjecture suggests primes q, where 2q plus 1 is also prime, are common. These kinds of primes often have properties that would make them suitable candidates for a small r. Did they use these conjectures to improve the bound? Not the conjectures directly, since they're unproven, but they did use a proven result by Fouvry related to the distribution of primes q, where q1 has large prime factors. This theorem allowed them to get a better bound on how large r needs to be than elementary methods gave. And that better bound on r led to? It led to an improved complexity analysis within their paper itself, bringing the exponent down. They mentioned getting O log n 152 or 7.5 using Fouter's result. Better than 21.5. And did it get even faster later? Yes, the story continued after the original paper. People refined the analysis and the algorithm itself. Notably, Hendrik Lenstra and Carl Pomerantz developed a modified version, often called LP1, which they proved runs in O log n6 time. O log n6. That's a huge improvement and much closer to what people might expect for fundamental problems. Even after this amazing breakthrough, the optimization continued. Did the original AKS paper suggest other ways to make it faster? Yeah, they pointed out a couple of open questions or directions. One was simply trying to reduce the number of a values you need to check in step 5. Maybe you don't need to check up to squared n. Perhaps fewer checks are enough. Fewer iterations of the main loop would certainly speed things up. Definitely.
They also mention a specific conjecture 6.1, in their paper, attributed to Bach and Peralta. What did that conjecture propose? It suggested that maybe you only need to check one specific polynomial congruence, using x1 instead of x plus a. It states that if you find a prime r that doesn't divide n, and you check if x1n is congruent to xn1, mod xr1n, then n must be prime, unless n2 is congruent to 1 modulo r. Just one check. And a simple condition on R, that sounds almost too good to be true. If it were true, it could lead to a dramatically faster algorithm. You can find a suitable prime r, 1 not dividing n to 1, very quickly, within the range to 4 log n. If that single check was sufficient, the complexity might drop to something like O log n3. Wow, O log n3, that would be incredible. Is the conjecture likely true? Well, Lenstra and Pomerantz later gave arguments suggesting that specific conjecture is probably false. Ah, okay, so that particular shortcut might not exist. Probably not exactly as stated, but they also noted that maybe a slightly different version, perhaps with slightly stronger conditions on R or the congruence, might still hold true. The possibility of getting down to O log n3 isn't completely ruled out, but that specific path seems unlikely. It's fascinating how the focus shifts from, is it polynomial, to what's the best polynomial exponent? It shows the depth of the problem. The paper also ends with acknowledgments, which is always nice to see. Absolutely. It highlights the collaborative nature of research. They give specific thanks to Hendrik Lenstra Jr. For what contribution? Lenstra provided a key insight that improved the lower bound used in their proof for the size of that group Kripaly we talked about. This apparently simplified their proof considerably and also helped improve the resulting time complexity bound they could prove. That's significant. Who else did they thank? They also acknowledged Adam Kalai, Amit Sahai, and Madhu Sudan for providing the proof structure for the lemma 4.8, that gave the upper bound on the size of that same group. So key parts of the proof machinery benefited from insights from others in the field. It really shows how even such a groundbreaking result builds upon the work and ideas circulating in the research community. Okay, let's try to wrap this up. The AKS test was truly monumental. It settled a decades-old question by providing the first ever algorithm for primality testing that was simultaneously unconditional, deterministic, and polynomial time. A landmark achievement. It definitively proved that the primality problem, primes, belongs to the complexity class P. No more conditional results or randomization needed for the theory. Now, what's striking is its relative simplicity, conceptually at least. It's built from fairly basic tools, polynomial algebra, modular arithmetic, extending Fermat's little theorem in a clever way. Yeah, compared to some of the other approaches relying on deeper analytic number theory or elliptic curves, the core AKS identity is surprisingly elementary, even if the proof of its correctness is complex. And looking back at the sources, the original primes is in P paper. And Tao's discussion, this deep dive, hopefully shows how these mathematical arguments are built, piece by piece, combining known facts with genuinely new insights to solve a major problem. It's a beautiful example of progress in theoretical computer science and mathematics. So here's a final thought to leave you with, something building on what we discussed. We have AKS proving primes is in P. We have improvements like LP1 getting the complexity down to O log n6. But the quest for even faster deterministic algorithms, maybe hitting that O log n3 mark, is still alive. The search for the absolute optimal bound continues. Right. So what is it about the deep structure of prime numbers that makes finding the provably fastest deterministic polynomial time test so incredibly challenging, even after we know such tests exist? There are still mysteries hiding in the primes. Definitely food for thought. Indeed. And one last time, we really encourage you to check out the original Primes is in P paper. The link is in the show notes. It's a rewarding read. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা একটা ইন্টারেস্টিং উপায় তৈরি। একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এটা জেনারেট করেছে, দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখার উপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, প্রথমটা হলো আইআইটি কানপুরের 3 জন গবেষক, মনীন্দ্র আগারওয়াল, নীরজ কোয়াল আর নিতিন সাক্সেনা। এদের 2002 সালের একটা পেপার, প্রাইমস ইজ ইন পি। ঠিক।
যেটা AKS প্রাইমালিটি টেস্ট বা মৌলিকত্ব পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে। আর দ্বিতীয় লেখাটা? দ্বিতীয়টা হলো ফিল্ডস মেডেলিস্ট টেরেন্স টাউয়ের একটা বিশ্লেষণ, এই পেপারটা নিয়েই। আচ্ছা, তো আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো যারা এই তাত্ত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞানে নতুন তাদের জন্য এই দারুণ কাজগুলোর মূল ধারণাগুলো একটু সহজ করে বলা। একদম, বিশেষ করে একটা বিশাল সংখ্যা যে মৌলিক মানে প্রাইম, সেটা কিভাবে চট করে এবং একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় সেটাই ফোকাস। হ্যাঁ, আর আমরা অবশ্যই বলবো শো নোটসে মূল পেপারটা লিংক দেওয়া আছে, আগ্রহীরা অবশ্যই পড়বেন। মৌলিক সংখ্যা চেনার সমস্যাটা তো বহু পুরনো, তাই না? অনেক দিনের। সবচেয়ে সহজ উপায় কি ছিল? সেই বর্গমূল পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখা। হ্যাঁ, কিন্তু এখনকার দিনে যে ক্রিপ্টোগ্রাফিতে বিশাল বিশাল সংখ্যা ব্যবহার হয়, সেগুলোর জন্য তো এই পদ্ধতি একেবারেই চলে না, অসম্ভব সময় সাপেক্ষ। ঠিক। আগে কিছু অন্য চেষ্টাও হয়েছে, যেমন ধরুন ফার্মার লিটল থিওরেম। হ্যাঁ, কিন্তু ওটাতেও তো ফাঁক ছিল, মানে কিছু যৌগিক সংখ্যাও পাশ করে যেত। হ্যাঁ, যেমন কারমাইকেল সংখ্যাগুলো মৌলিক না হয়েও পরীক্ষার শর্ত পূরণ করে দিত, তো একটা নিশ্চিত আর দ্রুত সমাধান আসছিল না। তাহলে এই AKS অ্যালগরিদম কিভাবে এলো? এর গুরুত্বটা কোথায়? গুরুত্বটা বিশাল, মানে এটাই ছিল প্রথম নিশ্চিত মানে ডিটারমিনিস্টিক অ্যালগরিদম। ডিটারমিনিস্টিক? হ্যাঁ, মানে কোনো রকম সম্ভাবনাতার ব্যাপার নেই, আর এটা কোনো অপ্রমাণিত গণিতের ধারণার উপরও নির্ভর করে না, যেমন এক্সটেন্ডেড রিম্যান হাইপোথেসিস। ঠিক, ওসব ছাড়াই এটা পলিনোমিয়াল সময় বলে দিতে পারে সংখ্যাটা মৌলিক কিনা। পলিনোমিয়াল টাইম মানে ইনপুট যত বড়ই হোক একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উত্তর দেবে। একদম। আগেরগুলো হয় সম্ভাব্যতামূলক ছিল, মানে সামান্য ভুলের চান্স থাকতো, অথবা শর্ত সাপেক্ষ ছিল। ঠিক। আচ্ছা, এই অ্যালগরিদমের মূল আইডিয়াটা নাকি বেশ চমকপ্রদ, ফার্মার লিটল থিওরেমের থেকেই ধার করা। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। ফার্মার লিটল থিওরেমেরই একটা সাধারণ রূপ ব্যবহার করা হয়েছে, একটা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন বা বহুপদী সমীকরণ। সমীকরণটা কি রকম? এই রকম: x প্লাস a n ইকুয়ালস টু xn প্লাস a mod n, মানে x প্লাস a টু দি পাওয়ার n আর xn প্লাস a, এদের n দিয়ে ভাগ করলে একই ভাগশেষ থাকবে। আর এটা সত্যি হয় শুধুমাত্র যখন n মৌলিক সংখ্যা? হ্যাঁ, কেবল তখনই। কিন্তু এই সমীকরণটা সরাসরি ব্যবহার করতে সমস্যা কোথায়? দেখতে তো বেশ সহজ সরল লাগছে। সমস্যা হলো x প্লাস a n কে এক্সপ্যান্ড করা, মানে বিরীভূত করা। ও আচ্ছা, পাওয়ারে তো n আছে। হ্যাঁ। n যদি বিশাল হয়? হ্যাঁ, তাহলে তো অনেকগুলো টার্ম আসবে, n+1টা সহগ কোএফিশিয়েন্ট আসবে। কম্পিউটারের জন্য এটা বেশ সময় সাপেক্ষ। বুঝলাম। তাহলে AKS পদ্ধতিতে কি কৌশল নেওয়া হলো? এখানেই আসল চালাকিটা। ওরা পুরো সমীকরণটা শুধু n দিয়ে ভাগশেষ না দেখে, মানে মড n না করে, ওরা xr1 আর n দুটো দিয়েই ভাগশেষ দেখে, মানে মড xr1, n। x⁻r−1, এখানে আরটা কি? আর একটা চালাকির করে বেছে নেওয়া তুলনামূলকভাবে ছোট সংখ্যা। পুরো ইকুয়েশনটা তাহলে দাঁড়ায় x প্লাস a nn ইজ ইকুয়াল টু xn প্লাস a মড xr1, n। ও আচ্ছা, দুটো মডিউলাস একসাথে। হ্যাঁ, আর ম্যাজিকটা এখানেই। যদি এই নতুন সমীকরণটা বেশ কয়েকটা এর মানের জন্য আর ওই নির্দিষ্ট ছোট আর এর জন্য সত্যি হয়, তাহলে গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় যে n সংখ্যাটা অবশ্যই একটা মৌলিক সংখ্যার ঘাত হবে, মানে প্রাইম পাওয়ার। প্রাইম পাওয়ার মানে p⁴k, যেখানে p মৌলিক। ঠিক ধরেছেন, pk আকারের। বাহ, তার মানে সরাসরি মৌলিক প্রমাণ করছে না, আগে প্রমাণ করছে যে এটা মৌলিক সংখ্যার পাওয়ার। এটা তো দারুণ। হ্যাঁ, আর তারপরের ধাপটা সহজ, কারণ কোনো সংখ্যা নিখুঁত পাওয়ার কিনা, মানে n=ab ফর্মে লেখা যায় কিনা, সেটা চেক করার তো ফার্স্ট অ্যালগরিদম আছে। একদম। সেটা পলিনোমিয়াল টাইমেই করা যায়। তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটা হলো প্রথমে চেক করা n পারফেক্ট পাওয়ার কিনা। যদি না হয় তাহলে একটা উপযুক্ত আর খুঁজে বের করা, আর তারপর ওই x প্লাস a সমীকরণটা মড xrn1 এনে চেক করা কয়েকটা a এর জন্য। ঠিক বলেছেন, এই ধাপগুলো মিলেই AKS টেস্ট। সত্যি অসাধারণ, বিশেষ করে যখন ভাবি যে এর প্রমাণটা নাকি তুলনামূলক সরল গণিতের যন্ত্রপাতি দিয়েই করা হয়েছে, মানে খুব জটিল কিছু নয়। হ্যাঁ, মানে সাধারণ বীজগণিত, সীমিত ক্ষেত্র বা ফাইনাইট ফিল্ডস আর গ্রুপ থিওরির কিছু বেসিক আইডিয়া।
আগের কিছু প্রমাণের চেয়ে এটা তুলনামূলক সহজবোধ্য। আর এর টাইম কমপ্লেক্সিটি? আপনি বলছিলেন পলিনোমিয়াল? হ্যাঁ, গাণিতিকভাবে লেখে ও সোম লগ n টু দি পাওয়ার কিছু একটা, মানে লগের পাওয়ারে। সহজ কথায় ইনপুট সংখ্যা n এর ডিজিট সংখ্যার সাথে পলিনোমিয়াল ভাবে বাড়ে। তার মানে যত বড় সংখ্যাই হোক, যত বেশি ডিজিটেরই হোক, একটা ম্যানেজেবল সময়ে উত্তর পাওয়া যাবে। ঠিক তাই। বড় ছবিটা দেখলে এই আবিষ্কারটা তাত্ত্বিক কম্পিউটার সায়েন্স আর সংখ্যাতত্ত্বের একটা বহু পুরনো মৌলিক সমস্যার সমাধান করেছে। প্রমাণ করে দিল যে মৌলিকতা নির্ণয় সমস্যাটা আসলে ক্লাস পি এর মধ্যে পড়ে, মানে গণনামূলকভাবে সহজ। একদম। তাহলে এত আলোচনার পর মূল কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে? এই আইআইটি কানপুরের কাজটা সংখ্যাতত্ত্ব আর কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটা ভীষণ পুরনো আর জরুরি সমস্যার একটা দারুণ এলিগেন্ট আর কার্যকর সমাধান দিয়েছে। আর এটা দেখাল যে পরিচিত সাধারণ গণিতের ধারণাকেই নতুন চোখে দেখলে, মানে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করলে কত বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা যায়। ঠিক। আর এটাও দেখাল যে ফার্মার লিটল থিওরেমের মতো ক্লাসিক্যাল জিনিসকেও কিভাবে আরো জেনারেলাইজ করে শক্তিশালী টুল বানানো যায়। সত্যি এটা ভাবাটাই আশ্চর্য যে এতদিনের একটা কঠিন সমস্যা যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটার সমাধান এমন পরিচিত কিছু আইডিয়া দিয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, যদিও এখন হয়তো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে আরও ফাস্ট অ্যালগোরিদম ব্যবহার হয়, কিন্তু AKS এর তাত্ত্বিক গুরুত্ব সেটা অপরিসীম। আজকের আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন মনে আসছে। এই যে কার্যকর অ্যালগোরিদমের খোঁজ, এটা তো প্রায় গণিতের পরিচিত সীমানাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, তাই না? অবশ্যই। তো ভাবনার বিষয় হলো, গণিতের আরও এরকম কোনো মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা আপাতদৃষ্টিতে সরল কোনো ধারণা হয়তো আজকের দিনের অমীমাংসিত, মানে আনসলভড কম্পিউটেশনাল সমস্যাগুলোর সমাধানের চাবিকাঠি লুকিয়ে রেখেছে। কি মনে হয়? এটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। হতেই পারে গণিতের গভীরে হয়তো আরও অনেক অবাক করা সমাধান লুকিয়ে আছে। যারা আরও গভীরে যেতে চান তাদের জন্য তো মূল গবেষণাপত্রটা রয়েছেই। হ্যাঁ, আমরা আগেই বলেছি শো নোটসের লিঙ্কে পাওয়া যাবে। ওটা পড়লে এই আইডিয়াগুলো আরও পরিষ্কার হবে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम गणित और कंप्यूटर विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे सामने दो दस्तावेजों का एक LLM जनरेटेड विश्लेषण है। पहला तो है 2002 का वो ऐतिहासिक शोध पत्र प्राइम्स इज इन पी। हाँ, IIT कानपुर वाला, अग्रवाल, कयाल और सक्सेना का। बिल्कुल। और दूसरा है इसी पेपर पर फील्ड्स मेडलिस्ट टेरेंस टाउ की टिप्पणी। हाँ। तो आज हमारा मकसद है कि सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में जो लोग नए हैं उनके लिए इन आइडियाज़ को थोड़ा खोलें। मतलब कैसे पता करें कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, और ये इतना ज़रूरी क्यों है। सही बात है। और ये प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ एक और खुद से ही भाग होती हैं। हाँ। वो गणित की बुनियाद है। और आजकल तो क्रिप्टोग्राफी यानी डेटा सुरक्षित रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो सदियों से ये एक बड़ी चुनौती रही है कि कैसे तेजी से और बिल्कुल पक्के तौर पर पता लगाएं कि कोई बहुत बड़ा नंबर प्राइम है या नहीं। और यहीं पर अग्रवाल, कयाल और सक्सेना का वो AKS पेपर आता है। जी बिल्कुल। उन्होंने पहली बार एक ऐसा तरीका दिया जो पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक था, मतलब निश्चित। हाँ, निश्चित और अनकंडीशनल, मतलब बिना किसी बाहरी शर्त के, और पॉलिनोमियल टाइम भी। पॉलिनोमियल टाइम मतलब कंप्यूटर के लिए काफी तेज। हाँ, व्यवहारिक रूप से तेज, एक गारंटी वाला तरीका जो बिना किसी अंदाजे के बता दे कि नंबर प्राइम है या नहीं। ये वाकई एक क्रांति थी। इससे पहले क्या होता था? मतलब तरीके नहीं थे क्या? तरीके थे, पर उनमें कुछ न कुछ दिक्कत थी। या तो वो अंदाजे पर आधारित थे, जैसे मिलर-रॉबिन टेस्ट। अच्छा, जिसमें गलती हो सकती है। हाँ, थोड़ी सी संभावना रहती है गलती की। या फिर वो बहुत धीमे थे, या फिर कुछ टेस्ट ऐसे थे जो गणित की कुछ अनसुलझी समस्याओं पर निर्भर करते थे, जैसे कि एक्सटेंडेड रीमन हाइपोथेसिस। अगर वो सच है तो टेस्ट काम करेगा। ओह, तो AKS ने इन सब शर्तों को हटा दिया। बिल्कुल, ये पहला बिना शर्त निश्चित और पॉलिनोमियल टाइम टेस्ट था। तो इसके पीछे का मुख्य आइडिया क्या है? ये किस गणितीय सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, इसका आधार है फर्मा का छोटा प्रमेय, फर्माट्स लिटिल थ्योरम। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर P एक प्राइम नंबर है तो कोई भी पूर्णांक A लीजिए
जो p से न कटता हो। ठीक है। तो a की घात p-1 को जब p से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। मतलब a to the power p-1 is congruent to 1 mod p। AKS ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। हाँ, उन्होंने इसे संख्याओं से बहुपदों माने पॉलिनोमियल्स पर लागू किया। पॉलिनोमियल्स पर? वो कैसे? उनका मुख्य समीकरण क्या था? उनका जो मुख्य समीकरण है वो है x plus an is equal to xn plus a mod n। x plus n बराबर है xn plus a मॉड्यूलो n। हाँ, मॉड्यूलो n। और ये समीकरण तभी और सिर्फ तभी सच होता है जब n एक प्राइम नंबर हो। अच्छा, ये तो सीधा लगता है। हाँ, लेकिन एक पेंच है। अगर n बहुत बड़ा हुआ तो x plus an को खोलने पर बहुत सारे पद आ जाएंगे। हाँ, n+1 पद होंगे। तो उसे सीधे सीधे कंप्यूटर पे चेक करना बहुत धीमा हो जाएगा। असल में शायद उतना ही धीमा जितना पुराने तरीके थे। तो फिर AKS ने क्या किया? यही उनका असली इनोवेशन है। वो इस समीकरण को सीधे चेक नहीं करते, वो इसे एक छोटे गणितीय दायरे में चेक करते हैं। छोटे दायरे में? हाँ, जिसे mod xr1n कहते हैं। यहाँ r एक खास तरह से चुना गया बहुत छोटा नंबर है। x की घात r-1 और कॉमा n। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, देखने में लगता है, पर mod xr1n का मतलब है कि हम दो चीजों के हिसाब से शेषफल देख रहे हैं। एक तो बहुपद xr1 से भाग देने पर और दूसरा संख्या n से भाग देने पर। अच्छा, और ये r छोटा होने से क्या होता है? r छोटा होने से कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाती है। उस छोटे दायरे में समीकरण चेक करना आसान है। और कमाल की बात यह है कि ये छोटे दायरे की जांच भी हमें n के प्राइम होने के बारे में पक्की जानकारी दे देती है। वाह, तो ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है? मतलब स्टेप्स क्या हैं? पूरी घात तो नहीं, जैसे 8 जो 2 का क्यूब है या 9 जो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर है तो वो प्राइम नहीं है, मतलब कंपोजिट है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बात वहीं खत्म, वो कॉम्पोजिट है। दूसरा, वो एक सही छोटा r ढूंढते हैं। तीसरा, वो कुछ छोटे a के लिए चेक करते हैं कि कहीं n और a का GCD मतलब महत्तम समापवर्तक 1 से बड़ा तो नहीं। अगर मिल गया तो n कॉम्पोजिट है, क्योंकि उसका एक फैक्टर मिल गया। सही। और चौथा, अगर इन सबसे नतीजा नहीं निकला तो फिर वो मुख्य समीकरण x plus n is equal to xn plus a को कई a मानों के लिए उस छोटे दायरे mod xr1n में चेक करते हैं। ठीक है। अगर किसी भी a के लिए ये समीकरण फेल हो जाता है तो n कॉम्पोजिट है। और अगर सारे टेस्ट पास हो गए? अगर सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो एल्गोरिदम गारंटी देता है कि n प्राइम है। अगर वो पॉलिनोमियल वाला समीकरण काफी सारे a के लिए और सही r के साथ सच होता है, हाँ, तो n या तो प्राइम होगा या किसी प्राइम की घात होगा। बिल्कुल। और क्योंकि पहला स्टेप घातों को पहले ही पकड़ लेता है, हाँ, तो अंत में अगर एल्गोरिदम कहता है प्राइम तो वो सच में प्राइम ही होता है। और आपने कहा था कि r छोटा होता है, कितना छोटे? हाँ, ये जरूरी है कि r बहुत बड़ा ना हो। पेपर दिखाता है कि एक सही r मिल जाता है जिसका साइज करीब log n5 जैसा होता है। log n की घात 5? हाँ, इसी वजह से ये एल्गोरिदम पॉलिनोमियल टाइम कहलाता है। मतलब इसे चलाने का समय n के अंकों की संख्या यानी log n पर निर्भर करता है, न कि खुद n के मान पर। इसीलिए ये बड़े नंबर्स के लिए भी प्रैक्टिकल है। ओरिजिनल पेपर में शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा बताई थी, O log to the power 12n जैसा कुछ। हाँ, शुरुआत में O log 10.5n के आसपास थी, जिसे बाद में और सुधारा गया। शायद O log 6n तक भी पहुंच सकती है, कुछ और गणितीय अनुमानों के सच होने पर मुख्य बात ये थी कि ये पहला ऐसा टेस्ट था बिना शर्त, निश्चित और पॉलिनोमियल टाइम। बिल्कुल, इसने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान की एक बहुत पुरानी पहेली को हल कर दिया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये है कि अग्रवाल, कयाल और सक्सेना ने एक बहुत ही बुनियादी सैद्धांतिक समस्या का एक अद्भुत और शक्तिशाली हल पेश किया। ये दिखाता है कि कैसे नंबर थ्योरी जैसे शुद्ध गणित के गहरे विचार कंप्यूटर के व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में काम आ सकते हैं। और ये भी कमाल है कि इसका प्रूफ, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा जटिल गणित नहीं मांगता पिछले प्रयासों की तुलना में। हाँ, अपेक्षाकृत सरल है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी बात सोचने को कि कैसे एक सीधा सा दिखने वाला सवाल, क्या ये नंबर प्राइम है,
हमें गणित की अलग अलग शाखाओं जैसे अलजेब्रा, नंबर थ्योरी और कंप्यूटर की गणना क्षमता के बीच के गहरे रिश्तों तक ले जा सकता है। बिल्कुल। इस विषय की खूबसूरती और गहराई को सच में समझने के लिए ओरिजिनल पेपर देखना वाकई फायदेमंद हो सकता है। हाँ, उसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है, जरूर देखें।